नमस्कार, स्वागत आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज पंच के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं तमाम खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन यहां पर सिर्फ खबर आपको नहीं बताएंगे, बल्कि इस खबर की पूरी पड़ताल करेंगे, तथ्य और आंकड़े जो हैं वो भी आपको समझाएंगे और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी। लेकिन आज किन खबरों पर हमारी नजर हम डालने वाले हैं, सबसे पहले आइए रुख कर लेते हैं उनकी तरफ। आज खासतौर से हम बात करेंगे चुनाव से पहले अगर देखा जाए किस तरीके से पश्चिम बंगाल जो है वो छावनी में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था जो है, सुरक्षा व्यवस्था, वो यहाँ नजर आ रही है। इसके साथ साथ बात करेंगे प्रहार को लेकर भी, किस तरीके से भारत जो है आतंकवाद या इससे जुड़े तमाम जो हम कह सकते हैं वहां पर क्षेत्र जो है उन पर कड़ा प्रहार करता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ ये रणनीति है, क्या कुछ जो मंजूरी है वो मिली है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही बात करेंगे किस तरीके से भारतीय सेना एक नई उपलब्धि जिसने हासिल कर ली है, एयर ड्रॉप जो सैन्य विमान है वो कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे। कैसे लगातार भारतीय सेना जो है कमाल दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल को। खासतौर से पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा का एक बड़ा प्लान जो है, यानी खाका जो है हम कह सकते हैं, वो तैयार कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बलों की 2 चरणों में तैनाती का फैसला यहाँ पर लिया है, जहाँ पर जीपीएस मॉनिटरिंग और इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल के जरिए फोर्सेस की हर मूवमेंट पर, हर गतिविधि पर जो नजर है वो रखी जाएगी। लेकिन चुनाव से पहले बंगाल में सुरक्षा घेरा पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रहा है और इसके कई फायदे जो हैं वो भी हैं। यानी आम जनता के लिहाज से अगर देखा जाए, मतदाताओं के नजरिए से देखें तो ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल हम सभी जानते हैं किस तरीके से चुनावों में वहाँ पर जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। लेकिन ऐसे में जो खासतौर से मतदाता हैं वो निडर रहें, उनके अंदर किसी भी तरह का भय ना रहे, किसी भी तरह का कोई डर ना रहे, उसके लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है। किस तरीके से अब ये जो पूरा फोकस है वो यहाँ नज़र आ रहा है, ये आपको आइए यहाँ समझाने की हम कोशिश करते हैं। खासतौर से जो फोर्स की तैनाती पर फोकस यहाँ नज़र आ रहा है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर जो तैयारियाँ हैं वो लगातार हमें नजर आ रही हैं, किस तरीके से लगातार तैयारियां चल रही हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर एक अहम फैसला जो है वो यहां पर लिया गया है और उसके तहत आपको बता दें, ये जो फैसला है चुनाव आयोग की बैठक में फोर्स की तैनाती पर फोकस यहां पर एक नजर आ रहा है। यानी उनकी तमाम जो गतिविधि होगी, जो केंद्रीय बल हैं, खासतौर से सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर जो नज़र है वो रखी जाएगी और ये नज़र रखेंगे ऑब्जर्वर, यानी सीधे सीधे अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग की उस पर नज़र भी रहेगी। साथ ही सुरक्षा बलों के लिए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जा रही है, यानी पूरी जानकारी जो है एक स्थान पर मिल पाएगी, किस तरीके से गतिविधि है, आवाजाही है। और उसी के लिए देखिए जीपीएस से लैस होंगी जो सुरक्षा बलों की गाड़ियाँ हैं, वो जीपीएस ट्रैकर उसमें लगाए जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए लोकेशन ट्रैक करने में उनकी मदद मिलेगी। क्योंकि जो खासतौर से सुरक्षा है वो राज्य का भी विषय हो जाता है, उस लिहाज से ज़रूरी हो जाता है कि सारी जानकारी, क्योंकि सरकार की तरफ से वहाँ पर जब केंद्रीय बलों की तैनाती की जा रही है वो सरकार को रहनी चाहिए। और किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है पुख्ता होती नजर आएगी, ये आइए आपको बेहतर ढंग से हम समझाते हैं। किस तरीके से जो स्थिति है वो फिलहाल हम यहाँ देख पाएंगे, क्योंकि खासतौर से जब हम बात करते हैं कैसे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको हम यहाँ पुख्ता करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले आइए सीधा रुख कर लेते हैं भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों के राष्ट्रीय राउंड टेबल सम्मेलन का, जहाँ सीसी ज्ञानेश कुमार फिलहाल संबोधन दे रहे हैं। Responsibility, as mentioned by my brothers, towards the electors of this country to ensure free, fair, transparent and efficient elections. As all of you are aware, India has the largest electoral database in the country. More than 90 crore electors, which equal to the North American continent, the South American continent, the European continent, the Australia, entire Africa, and still 8 crores are remaining to be allocated to some other continent. With such a large electoral database, naturally, the holding of elections, preparation of electoral rolls becomes one of the most challenging tasks on this planet. During the Lok Sabha elections, the Election Commission has on its deputation nearly 1.8 crore officers who help us conduct these elections. And the significance of 1.8 crores
should also be appreciated and understood not only by all of us, by perhaps the entire world. The governments together, the biggest government in the world and the biggest private company in the world in terms of employment, are just 85 lakhs. You double that, it is 1 crore 70 lakhs. And you take 10 lakhs more, and that makes the Election Commission of India conduct the Lok Sabha elections, which are held periodically, fairly, transparently, and efficiently. This mammoth work, done with commitment by our foot soldiers, right from booth level officers to assistant electoral registration officers, to electoral registration officers, to district election officers, to our chief election officers, electoral officers, India has earned a global prestige. And the result, as you saw, India today chairs the world's leading organization, that is International IDEA, which contains 36 countries. Recently, we held an international conference here where 70 countries participated. And each of them were not only interested to collaborate with the transparent practices being adopted by the Election Commission, some of them have also brought laws in line with what is happening in the country, that is special intensive revision. Looking at this global responsibility, apart from national accountability, with respect to the scale, the range, the depth, the transparency and efficiency, it is of most vital importance to have pure electoral rolls. Pure electoral rolls are the bedrock of any democracy. And the Election Commission of India, in its historic pursuit, started the special intensive revision, wherein which all eligible electors should be inside the rolls, while at the same time ineligible electors should be excluded, in line with Article 326 of the Indian Constitution. This process was started in Bihar, completed flawlessly with 0 appeals, currently undergoing in 12 states, out of which 11 states electoral rolls have been published. And this hall, collectively, all of us together, must salute the hard work which is being done or has been done by our booth level officers, AEROs, EROs, DOs and CEOs, including all the national and state political parties, their agents, the booth level agents, the district level representatives, state level representatives, and the national level representatives. I would also like to highlight with you the proactive approach of the Commission in meeting with all the stakeholders. We started meeting all the national and state political parties on our invitation. Nearly 4,000 meetings were held at the sub-divisional level, that is at the constituency level by the EROs, with 28,000 political party representatives participating in it. At a second tier, they were held by district election officers, third tier at the chief electoral officers, and fourth tier at the Election Commission. Apart from electoral rolls, making them pure and making them accessible, making them easy for identifying a voter who should be a citizen of India, the Commission also stresses the transparency and ease of voting. All of you will be very happy to know that during the international conference, a polling booth was set up here by the Election Commission officials. And all the 70 countries, they went there, they underwent the polling process. And when they met me, they all were showing the ink which they have got. And
the kind of detailed and transparent processes which Election Commission adopts, and they have invited our teams to go to their countries, and they will be also coming here to adopt whatever is possible according to their electoral laws. Having said this, I think a time has come now where the much needed synergies between the Election Commission of India and the state election commissions should be achieved without fail and without any further delay. In this era of technology and fast-moving information, it is of utmost importance that all of us, being constitutional bodies, discharge our duties with a single goal, and that is, we all should be collectively able to provide each and every elector of this country a pure electoral roll, transparent and maximum ease of voting, so that there is no conflict between our processes as far as the electors are concerned. All of us operate in different set of laws. The constitutional responsibility to the Election Commission of India gets translated through the Presentation of People Act 1950 and Conduct of Elections under Representation of People Act 1951. These set of legislations are approved by the Parliament. Similarly, for each of your state and union territory, the authority being the same of the state election commissions, they do work under the laws which are approved by their state assemblies or competent authorities in case of union territory. It's very important that there should be synergies, because the RP Act 50 and 51 gets amended from time to time, and constitutional amendments, perhaps when they do not take place in any other state legislature, the outcome for the elector becomes divergent. Now, that is one issue which I would request should be addressed today in this conference. How do we address it? One, technology. The Election Commission of India network, in short ECI Net, is a one-stop application through a mobile. And literally all the countries have desired to collaborate with Election Commission of India, and I think our officers, including DGIT, are going to take it forward before we hold the next international conference on 3rd December in New Delhi again. The ECI Net is not only used for preparing the electoral rolls, but also wide usage by any elector or any stakeholder to check the status of its rolls, including the political parties. It is also used for conduct of elections, whereby the percentage of votings, the movement of polling officers, presiding officers, etc. And it is also used for counting, where the results are displayed on near to real-time basis. It is also used for nominations, the affidavits given by the candidates, and literally anything which is under the elections is on ECI Net, and it's being upgraded day to day by our IT team. And further developments we will also like to associate with all the state election commissions, so that this hard work which has evolved over years in the Election Commission of India and being given final touches by our IT team is utilized for the benefit of electors by all the state commissions as well. The second issue, which when we have met state election commissioners, many of them have been senior to me in service in the past, they have raised an issue of the electronic voting machines to be shared as and when they need, provided we do not need them.
I hope the deliberations today will be able to find synergies in this regard so that the EVMs which are available with us can always be loaned to you, provided they are not to be utilized during that period by the Election Commission of India or during the election petition period of 45 days or during the pendency of any election petitions. If we synergize these resources, it will be a national saving, irrespective of the technologies which are evolving in the EVMs. Similarly, another issue which will be flagged today in the presentations will be sharing of electoral rolls. One of the best ways could be perhaps to have similar eligibility criteria for the electors. Why I am saying this is because the elector per se wouldn't know the legal nuances. And in the electoral rolls, as per 1950, he is supposed to be in, but as per the state laws, he is supposed to be out for the municipality or panchayat elections and vice versa. And that creates a little confusion as to why this is happening. So I think the August gathering of this House, with all the constitutional bodies sitting together, should be able to find a way forward for this. As my brother Dr. Vivek Joshi mentioned, few states' eligibility criterion are different. Maybe because the latest amendment in the RP Act 1950, which came in 2022 or 21, is still to be, what should I say, implemented or considered by the state legislatures so that the electoral rolls and eligibility are similar in nature. On the side of Election Commission, also, when we do Form 6, we necessarily or mandatorily do not ask the ward number or the municipality or the panchayat. We take the address as it is. So naturally, once you take the electoral rolls from the Election Commission, you will have to rework by saying that which municipality, which ward, because the elections have to be held ward-wise. So these changes perhaps Election Commission may also like to consider once these deliberations are over, so that the ECI net becomes a common platform for you all as well as us. Lastly and not the least, you will be very happy to note that India International Institute for Democracy and Election Management, that is IIIDM, headed by our DG who is also here, is now one of the world's largest organization as far as electoral training is concerned. Last 12 months, more than 7,000 people have already been trained on a physical basis with a wonderful auditorium and infrastructure there. There is residential facility of around 80 to 90 rooms. And I would request all the state election commissions to utilize this infrastructure on which the entire world has been proud of. And perhaps nowhere we have such a wonderful campus with virtual labs, with training materials being developed and with videography being delivered or video reels being delivered, lectures, training materials, etc., etc. Please feel free to use it. This is something which the Election Commission can offer you right away. With these little words, I'm very happy to say this inaugural words, which will perhaps set the tone for this conference and hopefully this one-day conference between the constitutional bodies, that is Election Commission of India and state election commissions, would come out with decisions keeping the elector-centric approach. With these words, thank you and welcome you all once again. Jai Bharat, Jai Hind. तो आप सुन रहे थे यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 27 साल बाद ये चुनाव आयोग द्वारा गोलमेज सम्मेलन जो है वो हो रहा है, जिसमें राज्य के जो चुनाव आयुक्त हैं वो भी शामिल है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया किस तरीके से जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, पूरी पारदर्शिता के साथ देश में कहीं ना कहीं चुनाव है कंडक्ट कर रहा था। और साथ ही 2024 का भी उन्होंने जिक्र किया, किस तरीके से बड़ी तादाद में सफलतापूर्वक पारदर्शी तरीके से जो चुनाव है वो संपन्न हुए और पूरा विश्व जो है आज को बड़ी हैरानी के साथ भी देखता हुआ यहाँ नजर आता है। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ पंच में। और जाने से पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर खास तौर से पश्चिम बंगाल को लेकर, और यहाँ पर हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद किस तरीके से एक न्यायिक कवायद जो है वो तेज़ होती नजर आती है। यानी पश्चिम बंगाल के 7 लाख वोटर्स जो हैं उनके अगर बात की जाए, उनका फैसला अब जिला जज जो हैं वो यहाँ करने में जुट चुके हैं। सोमवार से जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। खासतौर से सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हमने देखा किस तरीके से जो कवायद है वो तेज़ होती नजर आई है, और उसकी वजह से 7 लाख वोटर्स का जो फैसला है वो जिला जज और उसके साथ साथ अतिरिक्त जिला जज जो हैं वो करेंगे। विसंगतियों को ना सिर्फ सुनवाई बल्कि दूर करने की उनका पूरी कोशिश यहाँ पर रहेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें 60 लाख पेंडिंग आवेदनों का निपटारा जो है वो शुरू भी हो चुका है। सोमवार से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और वहीं अगर हम बात करें तो करीब 294 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 202 जजों की जो सूची है वो फाइनल की गई है। और साथ ही इसके लिए आपको बता दें करीब 1 करोड़ 52 लाख वोटर्स को सुनवाई के लिए बुलाया भी गया है, जिस तमाम जो विसंगतियां हैं उनको निपटाने की जो प्रक्रिया है जिस तरीके से शुरू हुई है। लेकिन खास बात एक ये भी है कि 23 जिलों में सबसे ज़्यादा जो पेंडिंग मामले हैं वो मुर्शिदाबाद जिले में है। तो अपने आप में ये भी एक रोचक तथ्य है इसका। और खासतौर से जो जज इस पर अपनी सुनवाई कर रहे हैं, स्पेशल पोर्टल पर 1000 शब्दों में वो अपना जो फैसला है वो भी दे सकेंगे। तो अब यहाँ पर कवायद जो है तेज़ होती हुई नजर आती है, और साथ ही सुनवाई बढ़ती है तो जजों की जो संख्या है वो भी बढ़ाई जाएगी। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से 58 लाख वोटर्स के जो नाम थे वो काटे गए थे, अब 60 लाख वोटरों पर जो नजर है वो भी यहाँ पर है। मुकुल, देखिए, पहले ही 58 लाख नाम काट गए हैं। वो ASDD जो है, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट जो वोटर्स थे, जिनको छोड़ के ही ड्राफ्ट लिस्ट सामने आया था, और अभी ये 60 लाख पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं। इसमें 2 बातें हैं। एक, 60 लाख पेंडिंग एप्लीकेशंस का निपटारा जब होगा वो कब होगा? 9 मार्च का जो डेडलाइन है वो पूरा होगा, क्योंकि पहले जो ड्राफ्ट लिस्ट निकला, ड्राफ्ट लिस्ट के बाद जो 1 करोड़ 52 लाख का सुनवाई चल रहा था, उसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 11 लोग काम कर रहे थे, 1 EO और 10 AERO। और यहाँ पे एक जज को एक असेंबली में काम करना पड़ेगा, और 60 लाख फिगर कोई कम फिगर नहीं है जी। तो सारी बात, तो ये सवाल, ये क्वेश्चन मार्क तो उठ रहा है कि क्या समय पर पूरे ये 60 लाख का जो है निपटारा होकर उसका सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगा सामने, क्या वो वोट दे सकेंगे इस 2026 के चुनाव में? चुनाव आयोग का कहना है कि इस स्थिति के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार राज्य है, क्योंकि उन्होंने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो पेंडिंग का जो लिस्ट है काफी से उसको टाल कर रखा था। और कल भी एक एग्जाम्पल आ रहा है कि कल भी जब बैठक हो रहा था तो उसमें फिर से राज्य की तरफ से कहा गया कि डॉक्साइल बी और या फिर बंगलार बाड़ी जो प्रोजेक्ट का जो सर्टिफिकेट है उस क्यों मान्यता नहीं दिया गया। तो उसमें चुनाव आयोग के तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा कि ERO और AEROs ने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं अब पिछले 1.5 महीने में, वहां पे कहीं भी डोमिसाइल बी या फिर बिहार, जो आप बिहार का जिक्र कर रहे हैं, बंगाल में जो बांग्लार बाड़ी प्रकल्प का जो जिक्र कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उसके सब
सुप्रीम कोर्ट ने जो तय कर दिया उसका डॉक्यूमेंट्स है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में साफ तरीके से कह दिया है कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लेना है। तो बिल्कुल सौरभ, और कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा किस तरीके से जो पूरी प्रक्रिया है पूरी होती भी है या नहीं। और जिस तरीके से आपने बताया कि निर्वाचन आयोग ने साफ स्थिति जो है वो कर दी है, लेकिन देखना यही होगा कि अब जो 60 लाख वोटर्स हैं उनके नाम कितने हम देख पाते हैं सूची में, या वो जो नाम है वहाँ भी एक बड़ी हम कह सकते हैं कट्टे हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए न्यूज मंच में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।